Now let's solve a question on cash flow statements. For this purpose, we're using illustration 27. Kindly open your books to the same. Now, the first thing that you do is identify which items belong to which activities. ठीक है? तो question में देखो, equity share capital is financing activity, redemption of preference shares again financing, general reserves fall under the adjustments which you do to P&L, right? Then profit and loss balances, again this will help you to find out the operating profits. Proposed dividend, this is a financing activity, right? Then you have creditors, current liabilities, bills payable, current liability. Provision for tax, again this is used to determine the tax paid for your operating profit, right? This falls under the operating activities. Goodwill, this is an extraordinary item used for profit calculation. Land building, investing activities, plant, investing. Debtor stock, bills receivable, current assets. And then you have balances of your cash and bank. Now make sure that you mark your adjustments. जो भी adjustment वाली item होती है उसके सामने आप star mark कर दीजिए, so that you know that you have to say solve something regarding that, right? Now whenever you're marking your current assets and liabilities, make sure that you also along with those mark whether they have increased or decreased. ठीक है? Once that is done, you move on to calculations of your cash flow. Now cash flow में आप फॉर्मेट बनाएंगे. सबसे पहले net profit. So profit and loss account का balance हमें दिया हुआ था, right? So we have just subtracted closing and opening and we've got 18,000, right? Now you adjust your extraordinary items, non-cash, non-operating. Again मेथड सेम ही है. फंड फ्लो में याद करो हमने क्या किया था. टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी हैड डन व्हाट, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिए थे उनको हमने ऐड बैक किया था, राइट? एंड जितनी भी इनकम थी जो कि ऐड कर दी थी, जो नॉन ऑपरेटिंग थी, उनको हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था. सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है. यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स कौन सी हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी हैं, depreciation, interim dividend, income tax, then general reserve and goodwill. If you see, general reserve has increased from 40 to 70. That means from profit we have done what, we have created a general reserve. So ये हमने माइनस कर दिया होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, add back करना पड़ेगा. So transfer to general reserve 30,000. Then you have goodwill. Goodwill का amount कम हो गया है. That means what, goodwill has been written off. Again expenditure which was subtracted from the profit, this will we have to add it back, right? उसके बाद depreciation आपको दिया हुआ है. depreciation non cash activity. Again हमने अगर अपने profit से ये minus कर दिए तो क्या करना पड़ेगा, वापस add back करना पड़ेगा, right? non cash activity. Okay. Then we have your interim dividend. अब देखो dividend के लिए you have proposed dividend balances also given in the balance sheet. So because there are so many adjustments, we go ahead and make an account. Opening closing balances आ जाएंगे, dividend paid आ जाएगा, and then you have your balance of proposed dividend. Now whatever is paid, this becomes cash outflow for your financing activities, right? तो ये financing में आप लिख देंगे. And whatever balance proposed dividend is there, you create this out of again profits. तो आपको इसको add back करना पड़ेगा to basically do what, to ascertain the operating profit, right? Okay, so what you do is whenever you're solving a cash flow question, आप simultaneously solve करते जाइए. इससे होगा क्या, you will not miss out on any items, right? So यहाँ पे we have mentioned dividend paid, जितना भी वो साल के लिए हमने पे किया 20,000, right? Then you have income tax. Again income tax की भी adjustment दी हुई है, तो we'll have to create an account. Opening balance 40, closing 50. कितना पे किया, 35 to 2 cash या बैंक से पे किया होगा. 35 becomes your tax paid and balance becomes again your provision for tax which you take out from your profit. तो minus कर दिया होगा तो add back करना पड़ेगा naturally. 45 यहाँ पे आ गया. Once you have ascertained and taken into account all the non-operating and non-fund items, फिर आप क्या करोगे, you will calculate operating profit before working capital changes. Now you're supposed to add your add or deduct your working capital changes. So if there is a decrease in your current assets or increase in your current liability, क्या इसका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल पे होता है? एब्सोल्युटली, राइट?
क्या इफेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल पे? When there's a decrease in current asset, working capital decreases. Similarly, when there is an increase in current liability, your working capital decreases. Remember, current liability के साथ inverse relationship है. तो अगर मेरा वर्किंग कैपिटल कम हुआ है तो पैसे क्या हुए हैं? कंपनी के पास पैसे बड़े हैं. दैट इज वाई वी आर एडिंग इट. सिमिलरली ऑपोजिट केस में क्या होगा? करंट एसेट्स अगर बड़ी हैं वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा. करंट लाइबिलिटी अगर कम हुई है वर्किंग कैपिटल अगेन बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम योर फंड्स. राइट, यू रिमेंबर फंड फ्लो में भी हमने सेम चीज़ की थी. यहाँ पे बस फॉर्मेट अलग हो गया. ठीक है. Now, after taking into account the working capital changes, you get your operating profits after those changes. इससे आप टैक्स माइनस करेंगे and you get to net cash flows from operating activities. ठीक है, which is 83,000. Now moving on to investing activities. Investing activities में आपकी land and building plant आते हैं, right? Now because depreciation adjustment is given, you will make sure you make an account. So opening closing of your land and building, you have depreciation, and then जो भी balance बचा that becomes the sale of land and building. ठीक है. Similarly you will make a plant account. अब देखो plant account में balance कहाँ पे आ रहा है? You have a credit balance. That means what? You have purchased that particular building. ठीक है. तो परचेज हुआ है मतलब आउटफ्लो हुआ होगा, नेगेटिव में आएगा, राइट. एंड सेल हुआ है मतलब इनफ्लो हुआ है, पॉजिटिव में आएगा. नाउ वंस यू हैव रिकॉर्डेड ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग, यू आर सपोज टू फाइंड आउट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. राइट, कितने आ रहे हैं? 1,20,000 नेगेटिव. एंड देन यू मूव ऑन टू कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग की आइटम्स इफ यू केयरफुली नोटिस, वंस यू हैव से आइडेंटिफाइड द आइटम्स इन द बिगिनिंग ओनली कि कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, तो क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है, राइट. सो यू विल मेक श्योर दैट यू डू दैट. अब देखो क्या शेयर कैपिटल का अमाउंट बड़ा था तो वो इशू होगा, राइट. एंड देन सिमिलरली प्रेफरेंस का क्या हो गया था? कम हो गया था. दैट मीन्स वी हैव रिडीम्ड सर्टेन प्रेफरेंस शेयर्स, सो नेगेटिव में आ जाएगा. रिडेम्पशन इज बेसिकली व्हाट? एक फिक्स पीरियड के बाद जब आपको आपके शेयर होल्डर्स के पैसे वापस करने पड़ते हैं. ओके, सो आउटफ्लो. एंड देन डिविडेंड पेड का हमने ऑलरेडी दैट वी हैड टेकन इनटू अकाउंट. नाउ वंस यू हैव असर्टेंड ऑल द 3 कैश फ्लोज, यू आर गोइंग टू फाइंड द नेट इफेक्ट. नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? वी हैव डिक्रीज इन योर कैश फ्लोज. वो वर्किंग कैपिटल गलती से टाइप हो गया है, दैट इज कैश फ्लोज, राइट. देन यू एड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, दैट इज योर कैश एंड बैंक. कितना ओपनिंग बैलेंस है? 25,000. And then you get your closing balance of cash and cash equivalents. This should match the amount given in the balance sheet.